It is believed that the souls which have committed extraordinary wrongs are forced to roam as lonely, often evil spirits, to torment the living before being reborn. These roaming supernatural evil spirits sometimes enter the body of an individual and disturb the consciousness, causing demonic possession. Demonic possessions are often cured by exorcism, which is a religious or spiritual practice of evicting demons and other spiritual entities from a person or an area they are believed to have possessed. Once from Apollo Hospital, a doctor calls me up to say that a Nigerian lady behaves very abnormally. She's becoming very violent and tries to pull down people, or she shows that extra power in herself. So I had gone there, and I prayed over the lady. I blessed her with the holy water, and she became calmer. And the next day, the doctors calls me up to say that so far she has not shown that abnormal behavior again. So usually exorcisms happens very rarely. The demonic possessions happens very rarely. Most of the times it's a psychological or mental imbalances that happens, or a person is possessed with certain thoughts that makes him to do certain things. We cannot say that it is a demonic possession unless and until doctors say that. Otherwise we need to evaluate by the doctor that it's a psychological illness or a mental illness. In our quest to witness exorcism, we encountered this major occurrence where two women became mysteriously uneasy on the commencement of prayers. Once the prayers went on for a couple of minutes, one of the two women started becoming impatient. She started screaming wildly and demanded the prayers to be stopped. It was quite evident that she became uncomfortable in the aura created by enchanting prayers. It was appalling to see her embody a paradox to the loud and vivid surrounding around her with a silent, mysterious smile. This also portrayed that her consciousness might have been controlled. The family of the woman screaming, constantly with the help of the priest present, were trying to bring her consciousness back in her control. The woman, in all her might, was clearly seen getting distressed with the efforts being put around her. At last, the chants then calmed her down, and it looked like she had been released of the possession. But only she knows the truth.
ये एक्सॉर्जन प्रोसेस एक इकलौता ऐसा एक्सॉर्जन प्रोसेस था जो कि इतना इफेक्टिव था, जिसने मुझे और मेरी टीम को माइनस हेडेक और कई जगह पे इतनी नेगेटिविटी दी कि हम अपने जब सीक्रेट कैंप में शूट कर रहे थे तो हम यही सोच रहे थे हम कितनी जल्दी से जल्दी इस नेगेटिविटी से बाहर आ पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि डिमोनिक पोजेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ना मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जॉर्सिज्म एग्जिस्ट नहीं करता या एग्जॉर्सिज्म एक नकली प्रोसेस है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कई बार हमने अपनी एविडेंसेस में ऐसा पाया कि एम्बियंस क्रिएट करने के लिए लोग वहाँ पे बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे एक लेडी जो कि जस्ट गेटिंग इन दैट ऑरा शी स्टार्टेड रिएक्टिंग, जैसे कि सारे ही रिएक्ट कर रहे थे उनके सेम वे में, उसका कोई अलग से म्यूचुअल रिएक्शन नहीं था और वो बहुत लेम रिएक्शन दे रही थी, उसको देख के ही लग रहा था कि शी वॉज फेकिंग इट। सेकेंडली मास्क, आप अगर मंदिर की लाइन में जाओगे तो बाहर ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं, उन स्टॉल्स में उन्होंने मास्क लगा रखे हैं भूतों के, और अगर आप मंदिर के गेट के बाहर मास्क लगा रहे हो तो ऑफकोर्स आप वो डर का ऑरा क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि वो जो मास्क लगे थे वो सारे डेविल्स के और इन सारी चीज़ों के लगे थे। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी फाउंड वॉज पंडित, जिसकी पॉजिटिविटी की वजह से मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। अगर मेरे अंदर कोई पोजेस्ड आत्मा है और मैं उसको थ्रो आउट करना चाहता हूँ, उस नेगेटिविटी को अपने अंदर से बाहर निकालना चाहता हूँ, तो मैं उस पंडित के पास इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उसके पास वो पॉजिटिविटी है, उसके पास वो एम्बियंस है जिस वजह से वो उसके अंदर से मेरे अंदर से वो चीज़ निकाल सकता है। अगर वो खुद ही वहाँ पे पोजेस होने की एक्टिंग कर रहा है तो मैं कैसे बिलीव कर सकता हूँ कि ये पूरा जो एग्जॉर्सिज्म प्रोसेस है वो 100% ट्रू है। Among many others, the entire dimension of life after death is unknowable, beyond human experience or understanding. Nature has greater powers, and we as humans are known and will be known to only a few. Everything else, like always, we will mold and believe.